children do not convey it and that seriousness doesn't come. So that is why principal ma'am said, okay, this time let us call all the parents. So we'll just start. So I will just take you through the journey that I think you have received. Ma'am, बाद में कर लेंगे थोड़ा सा है ना. Thank you. You have received a circular from the school where we have written that no preparatory leave will be there, but school will be now working. This is what is written. Preparatory की जगह पर now it is working. Working is because we have realized that children are not studying at home. Most of them, some of them are studying, but they are not. And then जो subject specific guidance है as per the CBSE requirement, as per the board requirement, that is not there. Because they are going for various tuitions, but sometimes even tutors do not know about the how the paper has to be attempted, how they have to write their answers. So that is why school is always better equipped. Our teachers are very trained. They already go for board corrections. They already have a lot of experience. So it's always good that children at the last minute also sitting with the teachers and discussing their doubts and clearing all the doubts, and they should know how they have to crack the board exam. So basically this is for that purpose. So one day when children will come to school, they will appear in the exam. After that 2 hours study. I think some of your, maybe your child has already attended the class. किया है किसी ने attend? So please, I would like to take the feedback from you. What was the feedback? Basically, my daughter's friend has attended the classes, and she told us we had given the worksheets and about the paper, and it is very helpful. Okay, thank you, ma'am. Thank you. So teachers have prepared topic-wise worksheets, topic-wise based on the board papers. जो CBSE board के papers हैं, वहाँ से they have picked, because अभी क्या होता है sir, what happens that sample papers are given year-wise, but teachers have collected the questions, topic and chapter. Can I ask one question? When there is a preparatory, there is no holiday, there is a working day. The next day there is a paper, right? So you are giving the worksheet on the basis of that paper only. That will be. That is also covered. That is covered for more time. Yeah. The day exam is over. First, we are taking 2 hours basically for that paper which is happening the next day. First focus is there. Yeah. After that, next day when they are coming for a long duration, then focus is again back on the same paper that is there, but in addition to that 2 more subjects are added, because target is not to get good marks only in the pre-board, target is to get good marks in the board exam. So that is like your school is up to 10th only. We have to prepare for the pre-boards also, because the result we get I understand. It is admission is going to be on the basis of the pre-board. Yes. But these are the capsules kind. The child will take a lot of time to gather all this information. We have already collected for the child. That is why I am just saying, once let your child attend the class. If your child says that it is not fruitful, आपको लग रहा है it is not of any use, then do not send. Then we will be sending the worksheet. From our side, we are very clear about it. Okay? But we just want that children should come, because this kind of preparation they cannot do on their own. Because topic में आपको एक topic मिला है, chapter मिला है, chapter के all questions at one place, that too all from CBSE board papers and CBSE sample papers. We are not depending on any private publisher. हमको करना भी नहीं है. No private publisher, no private guest papers or something like that. We are just depending only on CBSE. And teachers are already well equipped. वो answer भी check कर रहे हैं. When they are writing the answer, they are checking whether the answer that was given is correct or not, whether marks allotted are correct or not. वो सब चीजें करके incorporate, ये capsule जैसा हम दे रहे हैं आपको, तो जो बच्चा को 3 घंटा लगेगा when they are studying on their own, the same thing they will be able to do in 1 hour. Teachers, you agree? Yes, ma'am. इतना फर्क है, तो आप डिसीजन आपको लेना, ठीक है? So now I just take you through this. So this is what the board. Okay, we start with the board examination. ये डेट शीट आपने लर्न कर लेनी है, ठीक है जी? So 16 February एग्जाम is starting. सारी प्रिपरेशन हम करेंगे till 14th से पहले 14th 15th is exclusively for this marketing and sale paper. Okay, 2 days before the paper, no other subject, only focus should come back. For every paper it should be like this. So that is why you need to see that how many days are available. जहाँ कम दिन लग रहे हैं वहाँ पर आप you can start preparation early where you feel sufficient days are there, but do not depend. ये last minute preparation नहीं है, ये just revision है. We are just talking about revision only. That focused last minute का जो revision है subject specific, that should start on 14 for the first paper.
So just go through the whole date sheet and just analyze. ऐसे तो बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं है, but कहीं जहाँ है, then see that how the next paper can be planned accordingly. Okay. So now the next one. Yes, why this session? Why we have called? Because we know that there is always collaboration between school and parent for preparing the children for any exam, and board exam the most important exam है. So that is why we need to collaborate. Focused approach for the last minute preparation, as I have just discussed with you what is our plan, how we are going for the last minute preparation. Then to discuss the required subject specific strategies. All teachers have actually made their subject specific strategies because हर subject को handle करने का एक तरीका होता है. So that also is like we are going to discuss here. So next, now the action plan. Next, yeah. So this I have already, we have shared with you. ये अभी का schedule है, like regular class है, then 13th को आज exam हो रहा है. After the exam today they are not staying back because of the Lodi. Yesterday they came and they studied English. I think they have shared notes with everybody. And today, whatever notes are prepared so far, वो जो हमारा plan था 11th and 12th वाला, that is already prepared. All the worksheets we have handed over to all the students who are sitting and appearing in the exam. It means जो 2 दिन का काम था वो हम दे चुके हैं आज already, ठीक है? So now, but my small advice to all of you would be, ये capsule ऐसे capsule नहीं है कि पढ़कर everything will be clear, but what you need to make sure is that child first reads the chapter. Chapter is clear to the child. After that, this should be. Good afternoon, sir. Please wait. ये आपको करना है, ठीक है? So first is very important. Directly don't come to these sheets if your child is not confident. But I'm sure all children are confident by now. They have all revised the chapters. They have already done the preparation. So directly they can go to this. But still, if they feel for any topic, any subject, they are not prepared, then make sure that first the chapter is done and then they come to the worksheet. Okay. Now, what is our plan? We are planning thorough revision in school, as I have just discussed. Printout of important CBSE board questions which are prepared by the teachers, I have just told you. Then targeted revision for all subjects, keeping in view the board exam, because teachers know the board exam pattern. They have been going for corrections, तो उनको पता है. That is why these are made by them only. Self study for 10 days before exam starts. वो भी हम देने वाले हैं. 6 के बाद they will not be called. If they want to come, they are most welcome to come. But we will not share any schedule the way we have shared it now. So 10 days हम आपको देते हैं. We will give to the children to prepare. Then practice papers, like we will prepare guest paper. During holidays also we were sending some sample papers. If you have seen those papers and if children have attempted it, then we shared the answer key also. So the same thing we will be doing again after the pre-boards are over. Again one more cycle will be done. We will be sharing it as a PDF also. We will be conducting it in the school also. Okay. Now, how they have to prepare? So mostly they have to rely on their own notes. That is very important. Small notes, just guide your children. They should prepare. NCERT book is the Bible. वो करना ही है. All questions read from the chapter out, like whatever is mentioned inside, in some corners, whatever is written. Sometimes it is written as a story. Everything, whatever in NCERT is given, so that is to be done. Then please check it. Out of syllabus topics are also mentioned in some of the papers. So that also should be discussed, and always refer to syllabus that is given for 2023-24 by CBSE. Subject teachers have already shared with them. Then we come to paper-wise revision based on CBSE sample paper, and take the paper from official website. That is very important. कोई भी sample paper private publisher का नहीं देना है आपने. It's not required. आप CBSE हम भी वही share कर रहे हैं. You people also depend on that only. Attempt at least 10 sample paper. 10 बहुत ज़्यादा है, यहाँ लिखा है. 5 भी करेंगे बच्चे तो more than enough है. Then we come to 3 hour clockwise. Just clock रख कर आपको paper attempt करना है. So that is very important. Keep clearing concepts from NCERT. All the questions whichever they are struggling with, they should discuss it now. Any term, any word that is written in the chapter, if they have not understood the meaning, they should ask. If they have not understood the concept, they should ask. That is very important, because अभी जो है questions are not from the back of the chapter. I think all of you are now aware. They can ask from anywhere. So that is why no concept, no word written there should be ignored at any cost. Then we have put phone on silent mode, or it should be away. Do not snatch the phone, please. थोड़ी देर के लिए दे दो. Do not fight over the phone. Let them talk to their friends if they want, but have a
like discipline at home. This is very, very important. Yes, next one. So general tips for cracking the board examination. Read NCERT thoroughly as just discussed, because paper will always be based on NCERT. बहुत प्राइवेट ट्यूटर्स काफ़ी बोलते हैं नहीं मेरा सैम्पल पेपर पढ़ो, ये आर.डी. शर्मा को पढ़ लो, ये आर.एस. अग्रवाल को पढ़ लो, ठीक है अभी तक हो गया, बट एंड में दे हैव टू कम बैक टू NCERT. अब शुरू हो जाए सिर्फ NCERT, कुछ नहीं और करना है. And first complete entire syllabus, then after that concept of each and every chapter is done. After that 3 previous year paper जो हम भी कर रहे हैं, even children can also attempt the whole paper, sample paper. My suggestion, I forgot to inform other parents, ma'am, board paper ज़्यादा important है than sample paper. Sample papers are difficult. ठीक है, पहले बोर्ड के पेपर्स करवा दो, उससे कॉन्फिडेंस गेन होता है बच्चे को. ठीक है, so board papers are very balanced. They take care of average students, below average and above average. Sample paper are generally like to give them the idea of the HOTS kind of questions or something like that. This kind of question also can be asked. So that is why my suggestion would be first board paper, after that sample paper also can be done. The students are advised to practice by attempting previous year, that is done. Notes and study material, they should make brief notes. Small keywords, it should always be there. वो last minute preparation के लिए भी it is always handy if they have written themselves. Do not depend on other person's handwriting or notes. अपने छोटे छोटे notes हर chapter के उनको बोलो कि 2-3 pages में छोटा छोटा लिख कर रखें. So one day before the exam, it is always handy. They can immediately go through and then appear in the exam. Use flow chart, mind map for understanding flow of idea. Then don't leave any question unattempted. We also inform, आप भी बताना बच्चे को कोई question unattempted नहीं छोड़ना. Even if they don't know the question, even if they feel that question is out of syllabus, then also they have to attempt it. Because they get marks only if the question is attempted. If they leave the question, they don't give marks. So they tragedy है. तो उनको बताओ कुछ भी आता है कर देना. But at least जितना question specific है, ask they should be attempting it. Now underline keywords. Next one. That is always there. When they are writing their answer, they should underline the keywords. Next, ma'am, this is general. Now, subject specific English. So, you can read it also. Exam paper has 3 sections, 20 marks for reading, section A. Then B section is of 10 marks grammar. Then section C is 40 marks. So, this is the way it is divided. Then how they should be managing their time. Even teacher has given specification for that. So reading comprehension 35 minutes, writing 15 minutes and 30 minutes attempt, grammar 15 minutes, literature 15 minutes, drafting 60 minutes, when they are writing the answer, revision 10 minutes at the end. Now first 15 minutes which they will get for the reading, so that time they should solve the grammar and simply mark the options. Options are given, so they should mark the options, but please guide them, they should not write anything on the question paper. Otherwise they will be in trouble. If you are good at skimming and scanning, read the passage and mark the answer with pencil. Pencil से वो circle करना, underline करना allow करते हैं. This is the only thing that is allowed. No calculation work, nothing to be done on the question paper when they are appearing in the board exam. They are allowed to tick mark. Tick mark only, बस. Tick mark allow होता है और underline करना है. बस that's it. They're not allowed, sorry, they're not allowed to like mark anything on the question paper when the 15 minutes time is given to them for reading. I think reading में allow कर देते हैं हम. No, depending on the जो Invigilator. it depends on everything on that answer. Yes. नहीं करने नहीं करने after पेंसिल भी नहीं करते. We used to allow. अब नहीं करते. अब नहीं करते. नहीं किया. लास्ट ईयर जहाँ सेंटर बना था वहाँ पे अलाउड हो गया था 15 मिनट. बिकॉज जितने टाइम मैं कर रही थी हम लोग जब थे तो अलाउ कर रहे थे कि मार्क कर दो. चलो कोई बात शीट पे नहीं लिखने देते हैं, but question हाँ paper ये में अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं. question paper नहीं दे रहे हैं. question paper में लेकिन आंसर शीट तो देते ही नहीं है तब. आंसर शीट तो आंसर शीट तो मैंने देते ही नहीं है पहले. क्वेश्चन पेपर हाँ क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है. अनुश्वर क्वेश्चन पेपर में भी नहीं करने दे रहे हैं. दे रहे आंसर शीट तो मिलती ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही थी. टाइम शुरू होगा.
मैम आंसर शीट मिल जाती है। हाँ? नहीं आंसर शीट तो रीडिंग टाइम के बाद Question Don't let paper you में- open that, ma'am. वो lock मैम होता है। एक मिनट मैम, आई डोंट नो, इतना स्ट्रिक्ट है कि वो ऑप्शन भी नहीं चूज करने के लिए टिक मार्क तो करना पड़ता है। डिपेंड है, डिपेंड करता है, कुछ इन्विजिलेटर्स फंसी कुछ इन्विजिलेटर फंसी होती But है। if they are reading, they know the answer. It will. नहीं मैम, मैं कुछ और कह रही हूँ। I know you. सीबीएसई में बहुत अभी आ रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं, आउट ऑफ एनी 7 अटेम्प्ट एनी 5। Okay. इसीलिए कहा जा रहा है, रीडिंग टाइम दिया जा रहा है कि उस 7 में से भी बच्चा 5 चूज करेगा। जब तक वो मार्क नहीं करके रखेगा वो नहीं कर पाएगा चूज। मैं थोड़ा इसको इतना ज्यादा नहीं मान रही हूँ, फिर भी हम पूछ लेंगे, डोंट वरी, बिकॉज गाइडलाइंस आर चेंजिंग। व्हेन आई वाज देयर इन डीपीएस हम अलाउ कर रहे थे, बिकॉज वी यूज्ड टू बी सेंटर ऑल्सो, तो इतना अलाउ करते हैं बिकॉज इन्विजिलेटर्स आर मूविंग देयर। राइटिंग नहीं अलाउड होता है, दैट इज टिक मार्क अलाउड होता है, वही मैम। टिक मार्क अलाउड होता है, सिर्फ टिक मार्क। क्वेश्चन क्योंकि अंडरलाइन करना अलाउड होता है कि आपको कोई क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाई व्हेन व्हाट, व्हाई व्हेन व्हाट, तो बच्चा कर लेता है ना कि मेरे को व्हाई पूछा है कि व्हेन पूछा है। नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं है, रीडिंग में करेगा क्या, रीडिंग में करेगा क्या। मैं खुद वंडर कर रही हूँ व्हाट द चाइल्ड विल डू, बट आपने बिकॉज आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन है मैम, आपने बोला मैम, आपने बोला कि नहीं करने देते हैं, आपने ऐसा बोला ना, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड। आंसर शीट नहीं खोलने देंगे, आंसर शीट नहीं मिलेगी मैम बच्चे। मिलती नहीं है। आंसर शीट को ऐसे करके जो खोला जाएगा ना वो बाद में खोला जाएगा। मैम मैं तो अभी ऑब्जर्वर भी गई थी, अभी तो गई हूँ मैं पिछले साल, लास्ट ईयर आई वेंट। अच्छा फिर मत, अच्छा सॉरी, अच्छा डोंट वरी, इतना अलाउड होता है जो मैं बोल रही हूँ वो हमने भी किया है। तो टिक मार्क कर लेते हैं, चूज, जैसे आजकल 7 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 5 करना है, तो बच्चा मार्क करके डॉट लगा देता है, कुछ लिख देता है। लिखने नहीं देते, मैं फिर से बोल रही हूँ, लिखने नहीं देंगे, आंसर को नहीं टिक करने देंगे। आपको सिर्फ ये है कि आपको बता देंगे कि ऐसे बच्चे को आप बोलिए अंडरलाइन कर दो क्या पूछा है, क्या आपको ठीक लग रहा है, कौन से ठीक लग रहे हैं विच यू कैन अटेम्प्ट, ठीक है, और क्या उसमें कीवर्ड आपको लग रहा है जिसको हाईलाइट करना है इन योर आंसर, दैट दे कैन अंडरलाइन। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज अलाउड। आंसर शीट विल बी ओपनिंग, दे विल बी अलाउड टू ओपन इट, सील होती है, वो सील को ही खोलने के लिए आपको 10:30 पर ही मिलेगा। 10:15 दे विल गेट द पेपर, 10:15 से 30 जो 15 मिनट है वो रीड कर रहे हैं पेपर को। रीडिंग नहीं होती है, रीडिंग में वो थोड़ा थोड़ा एक अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं बच्चे वहां पर। दैट इज व्हाई दे आर अलाउड टू जस्ट पुट डॉट्स, पुट जस्ट टिक मार्क वगैरह, तो ये इतना अलाउड होता है। बाकी आंसर नहीं लिखने देंगे, वो कैलकुलेशन नहीं करने देंगे। अगेन आई थिंक वो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, स्पेशली मैथ्स फिजिक्स, दे विल नॉट, दे कैन सिंपली राइट कि इसमें मुझे लाइक अंडरलाइन कि इसको दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव टू हाईलाइट इन माय आंसर, और दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू टेक केयर ड्यूरिंग माय अटेम्प्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स इट। चलिए, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल साइंस में प्रायोरिटाइज नीटनेस। नीट पेपर इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, सो प्रेजेंटेशन के लिए ड्राइंग मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स है, केयरफुली रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन, रीडिंग टाइम में कॉम्प्रीहेंड कर लो, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, व्हाई व्हेन वेयर जो भी है उसको अंडरलाइन करके रखेंगे। अवॉइड लीविंग एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन को लिखना होता है, नो नीड टू राइट फुल आंसर, बता दो बच्चों को, दे कैन सेव देयर टाइम बाय दिस। यूज अ पेंसिल फॉर द मैथ वर्क, अंडरलाइन कीवर्ड विद पेंसिल, यहाँ पेंसिल लिखा है, प्लीज डू इट विद पेन ओनली, अदरवाइज दे विल वेस्ट देयर टाइम, दे विल कीप लुकिंग फॉर पेंसिल्स, नो नीड, पेन से ही करने, एंड नो ब्लैक पेन, नो रेड पेन अलाउड, ओनली ब्लू पेन, ब्लू पेन एंड पेंसिल, ब्लैक बिल्कुल ऑब्जेक्शन हो गया, नहीं, दे आर नॉट अलाउड नाउ। In situation of limited time or word count, construct a concept map. If your child feels that there is less time, last minute may at least they can write some keywords, some flow chart, some mind map they can make and leave. Because if they don't know, they do not have time to write the full answer, so at least they should write something. Effective management of time, that is very important, that how they have to attend. So management of time, I think we have discussed with children also, आपके साथ भी discuss कर रहे हैं। Usually we guide them कि जो objective type question है 1 to 20 first go में they should attempt. After that they should go to maximum marks questions, 5 markers. 5 markers together. After that 4, 3. This is the way they should go. In this way they will be able to attempt major chunk of the paper initially only. Otherwise they get panicky. Initially when they start, speed is also slow. This is the practical problem. जब start करते हैं speed थोड़ा कम होता है. कम speed में if they are attempting 1 marker, so it will take a lot of time. So it is always good to start with the long answer. Now the maths.
So ma'am is also here. Ma'am, if you don't mind, you do, my throat is also saying take little rest. Already ma'am has told that you have to write the formulas and the theorems and develop with revision at the last moment. And my advice will be, when the math paper is the next day, please tell your children not to do anything Monday before. Only revision, क्योंकि लास्ट मिनट में वो इतना कुछ कर देखने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो जो whatever they know already ना, तो they get panic. तो इसीलिए theorems, properties, formulas, they should have at the last day a sheet where they have to see and remember all the formula. Problem only comes if child knows the question and in the beginning if he is not applying the right formula, so he is not getting the marks. Last minute में अगर formula revise नहीं होते तो next day there is a lot of confusion in the volume and surface area depending upon the subject. So they should be very clear with all the chapters key formulas. हमारे हर चैप्टर में कोई ना कोई ऐसा मेजर formulas होते हैं जो बच्चे confuse कर देते हैं आपस में. तो that they have to be very careful. and उसके लिए जैसे beginning में भी हम कहते रहते हैं first page में chapter के आप सारे formulas लिख लो. Now this is the time when they are revising, they can take at least 2 pages and write all the formulas chapter wise. So at least if something is wrong at the end of the question, at least they will get the marks. They have started correctly the question. And next is the which obviously a child when reads the paper, he comes to know that how many questions I know very well. किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा मुझे आते हैं, तो that section should be attempted first. ये हम क्लास में भी बताते हैं. There is no logic that you have to start from A or E or D. Suppose you know 5 markers. 5 markers questions are very straightforward in maths. Yes. The tricky question only comes for 1 mark and 2 mark. And 1 mark is more tricky than the 5 marks. 5 mark the length is big. You have to write each and every reasoning. And they every get marks for properties. steps also. Steps also. Yes, yes, important. अब 1 mark में हमारे steps नहीं है. लेकिन 1 mark में tricky इतना होता है कि बच्चा सोचता रह जाता है और उतनी देर में 5 marks का question कर सकता है. Because it's a straightforward. If you see all the questions which we have also given now from the CBSE last 10 years papers, the long question means in the length they are big. But the concept is straightforward. But in the MCQ, the concept is tricky, but the steps are very little. वो tricky में ही वो time waste कर देंगे. So already I have told the children also, reading time में MCQ जो आते हैं उन पे focus कर लो. जिसमें लग रहा है कि सोचना है, do at the last. So come to the section 5. Then case study questions are direct, so they can do that. The second point is that. Now after completing the basic and everything standard, they have to do accordingly. So when they do the papers, 3 papers at least of last years, they will come to know which question is coming again and again with the changed digits. So that gives an idea to the children that this question is very important. So I have to focus on this. And already children know very well किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, किसमें 3 मार्कर्स हैं, केस स्टडी कहाँ है. बिकॉज वी हैव गाइडेड द चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली. एवरी वर्कशीट वी आर गिविंग एंड वर्कशीट में तो हमने हर चैप्टर के डाले हैं केस स्टडी. बट नाउ व्हेन वी आर गिविंग दिस व्हाट मैम हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट लास्ट 10 years पेपर्स, तो जिसमें से केस स्टडी नहीं आती बोर्ड में वो नहीं दी हमने. तो चिल्ड्रन विल गेट एन आइडिया कि हमें कौन से क्वेश्चंस किस तरह से वी हैव टू प्रिपेयर इट. And preferably it's written that it's a child's choice, but my experience says if you start the paper from the back, It is you always for all finish it down. subjects. I agree with ma'am. Even this time also when I am going through the pre-board correction of the children, what I have seen, the children who are spending more time on the MCQ, like they're writing the steps. How many times we have told we don't need the steps in the MCQ. You do in the rough, wherever do we want the right answer. So the children, those who started from the section A MCQ, when they come at the last, they are having very less time. Panic, जल्दी कर रहे हैं, फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल है, पावर अगर 2 लिखनी है, टाइम कम है, वो 2 की जगह या तो पावर लिखते ही नहीं है या 3 लिख रहे हैं. क्योंकि because the time is less at the back and back question needs more time to do. So with the children we will share that also, कि how much time should be taken for the question depending upon the marks. कि अगर 5 marks question है तो कम से कम 6 से 8 minute you can spend on that. But MCQ में if you are spending 5 minutes in one MCQ, it means you are on the wrong track. वर्क नहीं करता है. That is only working for other social and. मैथ्स के लिए MCQ कई बार ऐसा ट्रिकी हो जाता है कि बच्चा उसी में ही वैसे रह तो जाता है. बैक वाला फॉर्मूला विल वर्क फॉर एवरी सब्जेक्ट. somehow I सारे सब में वर्क करता है. बैक वाला बैक से करना है, मैक्सिमम मार्क्स आ मैक्सिमम मार्क्स हम कवर अप कर लेते Cover हैं. up हो लास्ट जाते में हैं जब MCQ आई हैव टोल्ड द चिल्ड्रन डोंट लीव एनी MCQ.
अगर लास्ट में करते हो, मान लो टाइम नहीं कुछ रहा, भी 5 हाँ, hour yes, left, यार कुछ ऑप्शंस लिखो, There is no negative उसका marking. 2-3 तो ठीक हो ही जाएंगे फिर भी। और नेगेटिव मार्किंग भी और नहीं है नेगेटिव ना। मार्किंग तो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो तो नेवर इसलिए टेंशन अनअटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, नहीं आ रहा उस लेसन की कोई तो प्रॉपर्टी आपको आती होगी, बिकॉज व्हेन द एग्जामिनर इज चेकिंग द पेपर वो ये देखते हैं कि चलो एटलीस्ट समथिंग इज रिटन इन एंड मल्टीपल चॉइस में मैम आंसर्स को भी वो कर सकते हैं ना ये लोग, लाइक सच आंसर कैन नॉट बी देयर, आप उसको रूल आउट दो आउट कर कैसे दो, हो जाते हैं, हमने rule out बच्चों को करके भी सिखाया, काफी निकल आता बाकी है। दो में ही कंफ्यूजन रहता है हाँ, ना दो वो, में आता है। so they have to work on that। This is what we are saying कि काफी ट्रेंड है बच्चे दैट। तो हमारे काफी बच्चों ने 78 बच्चे अब जो प्री बोर्ड में दिए, काफियों ने तो लास्ट से पेपर शुरू किया एंड देयर ऑब्जर्वेशन वाज, जब मॉक टेस्ट किया उन्होंने कहा जब हम लास्ट से कर रहे हैं हमारे पास टाइम बच रहा है रिवीजन करने And do this for every subject I am guiding you, like I am telling you, please करा के देखो, अभी टाइम है, अभी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, like we have time, we can take risk, 1 month, we can take enough, risk we now. can do the regular बाद में practice। नहीं रहेगा, so yeah, this is very important to understand right now. Thank you very much. Thank you. So this is now for science. I think first is biology. Practice all the diagram with label and function of each label should be done by the student. Chemistry to written practice of all the chemical reactions given in the NCERT book. Learn all the processes involved in the extraction of the metal along with the chemical reactions. Structure of all the hydrocarbons and functional groups with the name, common name, UPAC name, etc. Teachers have already done all this in the classes. Then physics, emphasis should be on these things: ray diagram, sign conventions, formula of each, all the chapters. Then practice numericals, learn all the derivations, learn rules and laws involved in the topic, and make sure that children are going through all the activities which are given in the NCERT book. They are saying that ma'am was here right now, I think she is busy in some other work. Ma'am was just telling all the children also and the parents also that all the case study based questions are based on activities which are mentioned in the NCERT book. So that is why NCERT book is the Bible. वो तो करना ही है, whatever is written, wherever it is written, if child is not clear, discuss with the teacher, with you, if in case if you can help, so whatever way, but everything what is written in the NCERT should be clear to this child. Next now, so for Punjabi language, this is the pattern that is going to be there for the exam. Reading section 10 marks, grammar 12 marks, writing is 18 marks, literature 40 marks. So manage time effectively for thorough preparation, try to solve grammar section and select the options you are going to attempt. Utilize your reading time to understand and solving unseen passage. Underline karna, the way instruction was given for English. Use flow chart and mind map wherever possible. Cram the letter formats. That is a must for English as well as for Punjabi and for other languages. This is for the board exam. This is for parents, for you. Very, very important. They should reach center latest by 9:30. Not by, latest. 9 o'clock target करिए आप. Gate close हो जाता है 10 o'clock. I will start with the practical implication of this. I think 3 years back CBSE started this practice of closing the gate. पहले नहीं होता था. 200 children from all India were debarred from appearing in the exam that year. Last year I was the observer in one of the schools. I went there. 2 children we refused to enter. मेरे सामने हुआ. I was in DPS. I think बहुत पहले start हो गया. I think 5 years पहले शुरू हो गया. Two students we had not allowed. मिनिस्टर का कॉल आया प्रिंसिपल को, उन्होंने कहा माई स्कूल्स एफिलिएशन कैन गेट कैंसर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज CBSE इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. सो दे आर नॉट ओपनिंग द गेट्स. आई एम टेलिंग यू, डू नॉट टेक इट लाइटली एट ऑल. प्लीज मत लेना. आपको लग रहा है बच्चों को यहाँ स्कूल में काफी लीनियंसी है, उनको लग रहा है दे कैन गेट अवे विद वॉट एवर दे डू, बट दिस इज स्कूल. यहाँ हो रहा है, वहाँ नहीं होगा, बिकॉज सेंटर इज सेपरेट एंड पनिशमेंट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. Affiliation gets cancelled. कोई स्कूल रिस्क लेगा इसके लिए? No school will take risk for your child. Sorry. Humanity से ये सब चीजें, यहाँ डिसिप्लिन की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी की बात ही नहीं हो रही. डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन. प्लीज रीच द सेंटर बाय 9 o'clock every day. Then 10 o'clock they close the gate. 10 से पहले they take children inside. After that there is seating plan that is given. Seating plan के accordingly they have to go to respective rooms. And in a particular school, wherever the center is, there are 4-5 schools coming.
So there is a lot of work that school has to do. By Do 10 not be o'clock, children are seated in the room. हाँ seated in the room. मैं वही बता 10 नहीं बोला मैंने कहा है कि वो before that they are allowed inside. 9:30 से start कर देते हैं open करना gate. Frisking होता है उनका checking होता है. हाँ 9:30 every day. No, the sitting will be different for every बता हाँ every day different होती है. वो reason बताते हैं उसका आपको. कुछ सब्जेक्ट्स की इसलिए चेंज होती है ना, हिंदी का सबके पास नहीं है, सबके पास नहीं है. और मैम सेंटर में वही मैं आपको बताने जा रही हूँ. सेंटर में मैम सारे पेपर हो रहे हैं, सिर्फ आपके बच्चे का नहीं हो रहा ना. वहाँ पर और बच्चा सर अपेयरिंग, उनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, उनका रोल नंबर अलग है. वहाँ 12th क्लास भी अपेयर हो रही है. पहले दिन आपके बच्चे का पेपर है, अगले दिन को बोर्ड का स्पेस तो लिमिटेड होता है ना, तो दे टेक आउट द चिप एंड देन दे पेस्ट द न्यू रोल नंबर. काफी काम होता है मैम. इट्स नॉट इजी. तो ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप ये मत सोचो कि ओनली योर चाइल्ड इज अपियरिंग देयर. उनके लिए सोचो कितना वर्क है. तो वहाँ पर like be disciplined. Your children are not. There are different groups of paper, A, B, C, D. हाँ ABC. ABC 3 सेट है अभी भी मैम. 3 सेट होते हैं. ABC ऐसे करके आता अरे है. हमने और बच्चों को children बताया हुआ है sitting next will not get the same paper. बट पेपर किसी का किसी के साथ सेम नहीं होता. चाइल्ड सिटिंग इन द सेंटर, 4 आसपास में सबका सेट अलग. बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं मैम. एक रो में 8 बच्चे आते हैं, ऐसे ही होता है ना मैम. 8 और फिर 16 will be seated in one room. तो 16 और maximum 7 का बनाता है. आई थिंक कुछ ऐसा रहता है ना कि जिससे क्या होगा, 3 खत्म हुआ है तो 3 खत्म हुआ है 1 सेट ABC. तो यहाँ पर फिर आपका A आएगा और A नहीं, A नहीं आएगा. तो फिनिश करेंगे A और B पर C आएगा. यहाँ A बैठा है तो यहाँ C आएगा. तो नेक्स्ट वाला जो आएगा वो A या B आएगा, कुछ ऐसा आएगा. तो कोई लोग नहीं होते हैं सेम पेपर में. इसमें ये होता है कि मैथ्स में बेसिक वालों का रूम अलग हो जाता है. हाँ बस वो एक और चीज है, वो बेसिक एंड स्टैंडर्ड वाले सिटिंग अरेंजमेंट अलग रूम्स में होता है. रूम अलग है बट वहाँ सिस्टम वही रहेगा. system विल बी सेम. ओके. So now students will report every day in proper school uniform because वो स्कूल को चेक करना है. वहाँ पर 5 स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. यहाँ पर they take lot of leniency that way, but वहाँ पर uniform is compulsory. We received phone call last year. Your children are not coming in uniform. It is very embarrassing for us, for school. Please, it is your. हमारे हाथ में नहीं होगा. ये आपका support is needed. They should wear proper school uniform and ID card of school. School का ID card रखना है and admit card that we will be giving CBSE board का hard copy signed by the principal and stamped by the principal. वो आपको देना होता है. Then student will not carry any bag items, smart watches, wrist watches. That is mentioned in the admit card में भी mention करते हैं वो लोग. And all instructions whichever are given, they will be following it. रिस्ट वॉच की कोई जरूरत नहीं है. रूम में क्लॉक लगा रहता है. CBSE ने प्रोवाइड कर दिया है सब स्कूल्स को, विच आर द सेंटर्स. So children can, those who are appearing in the exam, they can check the time from there, and teachers are also, invigilators are also keep repeating in the room. So that is not a big problem. Then they can carry a transparent pouch. अब बहुत कुछ अलाउड नहीं है. पहले बहुत कुछ होता था. Carry necessary articles and transparent water bottle. Water they will serve in school if you do not have arrangement, but वो स्टील बॉटल्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होगी. ठीक है, आप पहले से सोच कर रखिए सब चीजें. ओके. नाउ एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एग्जाम दैट दे आर गोइंग टू गिव. आफ्टर दैट रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट. आपने पढ़ ही लिया होगा. पियर्सिंग में आजकल नो स्पिन्स अलाउड नहीं है. जब नीट का एग्जाम हो रहा है, हमने रिमूव किया था DPS में किसी बच्चे का नो स्पिन. शी वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली बट वी कुड नॉट हेल्प. I'm just giving you examples कि ये level आने वाला है later. So it's good that you prepare your children for this exam. That is very very important. कोई भी I think ear studs allowed नहीं होते हैं उन those exams. तो यहाँ भी आप मत बना कर भेजो उनको. No ornaments, nothing they should not be wearing. They should get used to this kind of system now. Then do not carry cardboard or any book or study material inside the campus. वो लोग बाहर ही रखवा लेंगे आपसे. Like outside the school campus. Campus में don't think that my child is carrying a bag तो अंदर जाकर बैग रखेगा. No, it is not allowed. So it will not be safe also. तो be you as a parent you be there with the child and take if it is needed. वैसे last minute में books नहीं होना चाहिए बच्चे के हाथ में. कुछ भी नहीं होना चाहिए. Very calmly गाना वाना सुनाते हुए बच्चे को ले जाओ. Just leave the child and say bye and come back. Okay. So this is the only thing. Just say bye to child with a sweet smile on your face. This is the only thing that is needed at that time. Now promotion policy I think we need not to discuss. हमारे सब बच्चे पास होने वाले हैं, हमको नहीं रखना. आगे चलिए. चलिए. Okay. So now
ये आपको you know that these are the options which are available in our school. ये subjects हैं which children are appearing. हमारे बच्चे कुछ बच्चे 7 subjects में appear हो रहे हैं. Some are appearing in most of them are appearing in 6. All are actually, I should say, all are appearing in 6. 6th subject is the skill subject. Then division, 80 marks theory, 20 marks practical for major 5 subjects. And for skill subjects, we have a different kind of a division. For skill subject, it is 50 marks theory and 50 marks practical. So these subjects also should not be ignored. They are the ones who are going to make a good percentage for your student. Now, next thing is, this I think we have done already. Even for computer application also, some students have taken 50 and 50. This is a policy that we have just received, although they are already following this policy. आप एक बार पढ़ लीजिए, once you all read it. No aggregate distinction will be awarded by CBSE board. CBSE board सारे 7 subjects के आपको marks देने वाला है. They will not total the marks, they will not write any percentage or anything. आपके हाथ में 7 marks का result is going to come. Mark sheet जो आएगा board से. ऐसे ही आ रहा था पहले भी, this time they have given the clarification. they clarification भेजा है. क्योंकि subjects are now more because all schools are offering many subjects to the students, so every mark sheet now is a different mark sheet. So overall percentage now जो अब आपने पढ़ना है वो देखिए. Candidate who has offered more than 5 subjects, the decision to determine the best 5, कौन से best 5 होने वाले हैं, will be taken by the admitting institution or employer. Institution अभी जब वो apply करें, employer जब वो job लेने जाएंगे. Further, it is informed that board does not calculate, declare, inform percentage of marks. If the percentage of marks is required for higher education or in employment, the calculation, if any, may be done by the admitting institution or the employer. Is this clear to everybody? Like, abhi, for example, I'll just give you a very simple example. Suppose your child wants to take admission in non-medical. So non-medical में जब आप जाते हो वहाँ, तो वो institution अपने आप से decide करेगा. Usually, I'm just telling you practically what they do. They take English. English is compulsory. English के साथ they would like to take maths. They would like to take science. Okay. Then SST ले सकते हैं. Or if they feel that child has taken artificial intelligence, or they feel that child has taken computer application, जो relevant subject है for the engineering stream, then those marks, if they are better than social science or maybe they are better than other subject, Hindi or Punjabi, they can take that. So जब आप admission के लिए जाएंगे, so this is what you should also be as a parent, you should be informed. You should ask the authorities कि आप क्या decision ले रहे हो, how you are going to calculate. Otherwise, all schools already, CBSE schools को already they know the policy and this is what they are already following. Like when I was in DPS, we were already following commerce के लिए, we were doing it this way. We used to take English. साथ में we used to take social science and mathematics, and after that we used to take either science or Hindi, जो भी बच्चे का better होता था, just to calculate our merit in the school. So this I'm just sharing with you. All schools have a different kind of a system. So accordingly, but now because our children have taken skill subject also, तो skill के लिए भी आप you can always claim. For example, if your child is going to take commerce, then marketing and sale is a very good option. You can always tell the school that your child has done well in marketing and sales. So those marks should be considered in place of maybe social science or maybe science or Hindi or any other subject for that matter. Okay. So now. Yeah, so this is also important for calculating the percentage in the finals. Board तो नहीं calculate करने वाला है. Board will not give you any percentage calculate करके, but you can take the percentage by replacing any subject with the skill subject. ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि English is compulsory, as I have already mentioned, your child has got less marks in maths but better in skill, then skill can go and replace math for your calculation, for school's calculation. For admission, again it will depend on the school, employer, institution. I hope it is clear to everybody. So yeah, हम calculate कर सकते हैं, बच्चे calculate कर सकते हैं वो अपना. They can replace this subject with the lesser marks in any other subject. English is the only subject that is compulsory. So I think this we have already discussed. NCERT is the Bible, written practice is a must, regular study habit, keep your social media and mobile away,
just bring discipline in the family at your house. That is very very important. घर का environment बहुत depend करता है that how children are going to perform. So last minute में your role is more than a role of the school. Okay, we are with you, we are doing our bit. As I have already said, teachers have prepared thorough notes, and for the past 3 days, they have been working day and night, and all the good questions are collected in the sheets as per the papers. It is not easy to collect questions from different sample papers and board papers and bring them together and then read each and every question and see that all the answers, whatever are written, they are also correct. So the big job they have already done. I think big round of applause for teachers. Teachers are not here, but I will definitely convey this message to them. Yeah, Praveen ma'am is here. Ma'am, please tell everybody that parents are glad for their effort. So thank you. So this is very important that you people actually be calm. Do not create any stress और डांटना बिल्कुल भी नहीं है. Yes, this is very important. बहुत important है. मैं फिर से इसको बोलती हूँ. डांटने के लिए क्लास 11th आपको मिलेगी, कर लेना, अभी नहीं करना है. ये कभी effective नहीं होता है. On the basis of my own experience, when I took care of my own children, when I was a teacher, now I am vice principal, सब roles में मैंने देखा है डांट का कोई effect नहीं है. लास्ट मिनट पे बच्चे को नहीं आता है, कभी मत बोलो यू डोंट नो दिस इवन. उससे अच्छा है उतने टाइम में 5 लाइन्स बताकर आंसर बता दो. टिप है. आई एम टेलिंग यू प्लीज डू दिस. आई हैव डन दिस. करना पड़ता है. ये मत बोलो कि तुझे इतना भी नहीं आता. उससे अच्छा फटाफट पढ़ के अरे 5 पॉइंट्स बेटा लर्न कर क्विकली, देखो हो गया, बस आ गया समझ, चलो अभी तो निकालेंगे हम टाइम. डांटेंगे हम बाद में. हमारे पास है मैम बच्चे तो आपके साथ ही हैं, हमें डांटने का मौका कम मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा. So, आप अच्छे से डांट लेना. तो ये थोड़ा सा टिप बहुत इंपॉर्टेंट है. रात को दे शुड स्लीप ऑन टाइम, सुबह जल्दी उठा देना. और जो हम सैम्पल पेपर्स शेयर कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन, आई थिंक एग्जाम डेज में भी वी हैव शेयर्ड सम पेपर्स. मेक श्योर दे अटेम्प्टेड एट 10 o'clock in the morning. So 10 to वो जो 1:30 वाला टाइम है, दे गेट यूज टू इट. अदरवाइज क्या होता है, बहुत बच्चे स्लीपी हो जाते हैं उस टाइम पर. Their energy levels are not there. My suggestion would be make them get up early in the morning. Now start making this practice. थोड़ा जल्दी उठाकर, so that they are fresh by 10 o'clock. Otherwise बहुत बच्चे headache का complain करते हैं. I have seen practically children complain क्योंकि उनको used to नहीं होते हैं वो इस routine के. Towards the exam आप all of a sudden, because now they are studying for the whole night, they are sleeping throughout the day. So when you all of a sudden make them get up in the morning and appear in the exam, then they start getting headache. तो ये नहीं करना है. Take care of their health. Please make sure they are properly, like they are wearing proper clothes. They should not catch cold or whatever way the environment that you can create at home. No mobile phone. If you are telling them, you also don't use for some time. No TV for some time. ये करना पड़ता है हम सबको. So all such kind of things, and please, if your पेरेंट्स आर विद यू, उनको भी अपने साथ रखो. दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड. उनको थोड़े दिन भक्ति संगीत में लगा देंगे हम लोग. सत्संग सुना दो. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज जस्ट जोक्स अपार्ट, बट ये इम्पॉर्टेंट होता है. बिकॉज आई नो व्हेन यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द होल फैमिली हैज टू बी टुगेदर. इवन मैं तो मानती हूँ कि रिलेटिव्स ऑल्सो हैव टू बी टुगेदर. I was a bad relative at that time when my child was appearing in he was preparing for IIT. मुझे याद है I had to say no to many relatives that year कि अभी please मत आइए. Nothing doing. वो लोग they were upset, but they actually after that they appreciate me a lot because of this. तो आपको सब appreciate करेंगे बाद में, तो don't feel bad. Okay, this is very important. ये चीज़ें अभी right now, child is your priority, board exam is the priority. Everybody should actually work around it. So this is something that is needed. But pressurize नहीं करना है, इसको थोड़ा enjoyment की तरह से लेंगे हम लोग. This is very important. So अभी 2-3 चीज़ें. एग्ज़ाम में जब बच्चे जाते हैं, प्लीज़ डिसिप्लिन सिखाइए. यूनिफॉर्म पहनना है, वहाँ हॉल में कुछ गड़बड़ नहीं करना है. Once they are debarred for 3 years. Things are not in our hands. I'm telling you, नहीं सुनते हैं आजकल, because अभी observers, I think मैंने बताया कि मैं as an observer गई थी. When we go as an observer, it means observers are coming from CBSE also, observers are coming from different schools also. Systems are so strong there. तो वहाँ पर they are not allowed to create any ruckus there. They are not. वो करेंगे तो they have all the right to send them.
वो निकालेंगे तो अच्छे से केस बनाकर निकालते हैं, दे डू नॉट लिसन. प्लीज मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू योर चिल्ड्रन. ओके, डराना नहीं है बट एटलीस्ट उनको कॉशियस करना है. देन दे शुड नॉट कैरी एनीथिंग रिटन और एनीथिंग बाय मिस्टेक और इंटेंशनली अनइंटेंशनली. दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको भी ध्यान रखना है. उनके बॉक्सेस में सब जगह केयर करो, कुछ नहीं होना चाहिए. इन केस इफ चाइल्ड इज अनवेल, प्लीज इन्फॉर्म द क्लास टीचर. आपके पास नंबर है सबके, इन्फॉर्म करके रखो. स्कूल में भी वी हैव वन रिप्रेजेंटेटिव दैट इज ऑलवेज देयर. तो आपको कोई ना कोई वहाँ मिल जाएगा. स्कूल के टीचर्स जाते हैं वहाँ पर, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, हो जाएगा. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. हमको बता कर रखो क्या प्रॉब्लम है. डू नॉट क्रिएट एनी पैनिक. चाइल्ड शुड बी कंफर्टेबल. अंदर भी सपोर्ट मिल जाता है, मेडिसिन दे सकते हो, फ्रूट खिला सकते हैं बच्चे को, कुछ ऐसा है, टी दे सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एडमिट कार्ड इज अ मस्ट, बट अगर इफ यू चाइल्ड हैज फॉरगॉटन, डू नॉट गो बैक विद द चाइल्ड टू गेट द एडमिट कार्ड. लीव द चाइल्ड एट द गेट. Teachers are standing there. School के teachers हैं वहाँ पर. Representatives are always there. We will let them inside. After that, you go and collect the admit card and give it to the center. हम बच्चे को एडमिट करवा देते हैं. हाँ, वही मैं बोल रही फिर हूँ. वो पेरेंट्स वही बोला कि आप जाकर एडमिट कार्ड लाओ. बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऑन द वे इफ यू हैव रियलाइज देयर इज नो एडमिट कार्ड, लेट अस गो बैक. कुछ भी लेने नहीं जाना है. स्टेशनरी भी रह गया, नहीं जाना. यू हैव टू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज child at the center. Enter inside the campus. That is the most important thing. We don't know which is going to be our center. Last year it was Doon International School. उससे पहले I think Paragon था. 3 साल से Paragon में होप की अब चाहिए ना Okay. कोविड Doon भी था I think. Doon कब बना था? 2020 में मैम बना था. Doon 20 में. 21 I don't remember. Last year से Paragon last year I was not here. Sorry. I think orientation भी मैंने नहीं किया था इस बार ना. So I was on leave that time. Paragon. Paragon बना था. 69. Paragon. पास ही होते हैं, स्कूल तो पास नहीं है, बट वो बहुत टाइट लेन्स होती हैं मैम. तो दैट इज व्हाई यू शुड सी वेयर द व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्कूल, कैसे पहुंचना है, क्या है. ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी डन. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, एंड प्लीज टेल योर चिल्ड्रन, टेल योर चाइल्ड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन डिसिप्लिन. एंड इसको बिकॉज ऑफ दिस दे कैन बी इन ट्रबल. अब हमारे हाथ में नहीं होगा. दैट इज बिटवीन द सेंटर एंड यू पीपल. तो वो वहाँ चले जाते हैं, तो how they behave there, so that is very very important. Please, you have to make sure that they are disciplined there also. Chaliye, anything else, any questions that you have, you want to ask? The orientation हाँ, we will be sharing. You will be sharing. Share, हाँ, बिल्कुल शेयर करेंगे. बच्चों के साथ अलग से सेशन लेंगे. Okay, yeah. वो भी That's plan. important. That is But they listen to you more than us. yeah. नहीं, हाँ. पेपर बाद में करवाया, पहले एक सेशन ले लिया था ले, हमने. हाँ. बच्चों को बिठा दिया था, आज भी बिठाया है. टुडे ऑल्सो दे वर हियर व्हेन दे केम एट 9 o'clock. सो सेशन वाज गोइंग ऑन. आपका थर्ड बैच है ना, सो दे वर ऑल मेड टू सिट हियर. दे हैव सीन, बट वी आर अगेन हैविंग अ सेशन. प्रिंसिपल मैम ऑल्सो वांट्स टू like motivate them and discuss what the plan is and how they should be going about for the board exam. So we are planning a session on Monday when they come back for the exam. So don't worry, we will be having it. But आपका जो role है as a parent, that is very important. So that is why this orientation was important. Yes, ma'am. Can we shrink the school hours, the revision days like they're having? कितना टाइम आपको चाहिए? 3 hours कर दे उसको, ऐसा कुछ कर ले. ठीक है, आप मैम से बात कर लेते. नो वरी, वी विल टॉक टू प्रिंसिपल टुडे. वो कर देंगे. बट जिस दिन एग्जाम देने आ रहे हैं वो नहीं कम कर पाएंगे मैम. उस दिन तो बिकॉज दे आर कमिंग, नेक्स्ट डे कर लेते हैं. बिकॉज जिस दिन एग्जाम देने आ रहे हैं, वी सेंड देम होम, बिकॉज दैट इज द डे व्हेन ऑल आर प्रेजेंट. एंड वो 2 hours में हम क्विकली थोड़ा जो भी टिप्स दे पाएंगे, दैट वी विल डू. एंड देन वी सेंड. अगले दिन के लिए मैं देख लेती हूँ, आई विल टॉक टू मैम. ठीक है. बट another thing, although we want them to be here, अगर आपको लग रहा है कि वो they are better off at home, हाँ, वही मैं बोल रही हूँ. तो आप डिसीजन भी ले सकते हो मैम. Do not send every time, but for some topics, because we will always be sharing with you. शेड्यूल हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि ये सब्जेक्ट होने वाला है, तो आप देख लेना which subject is important for the child. Accordingly आप प्लान कर लो. So that is why there is flexibility in this system also. Anything else? Thank you so much for your support. I wanted that all the parents had come, but no problem if all those were here. So I hope it was fruitful for you. And one thing more, you have seen that we people have been doing a lot for the children. And please give us Google review also. Okay, I think we have already shared that with you, but our Google review is not increasing. So वो उसको थोड़ा सा improve करना है.
Please, you can talk about session, the way it was conducted, इसके बारे में बात कर सकते हो, what your child likes about the school. आपके बच्चे तो अब बस थोड़े टाइम के लिए हैं, तो all the more reason parents will look up to, always mention that your child has studied for 10 years in the school, he's on the, like he's going to appear in the board exam, such kind of things if you write in the Google review, then definitely it can create a buzz around that school is good, and then only admissions will take place. Admission 10th class में नहीं होता है, admission nursery में कर हमको we have to make it to class 10, so that is why this is very important. And parent 10th का result देखकर you are very smart, good, thank you. So 10th का result अच्छा आता है तो UKG में admission बढ़ता है. We So have a it younger is, sibling also in the same school, so अभी 10th से जाएगा, 3rd क्लास में already है. ये होता है मैम सब स्कूल्स में ऐसे हो रहा है. So that is why वो जो बस करना ट्राइसिकल टॉपर और वो इसीलिए स्कूल ज़्यादा करते हैं, because उनको पता है, because of this admissions will take place in the nursery or KG class, because when parents are putting their children, they do not think your only child will go for 2 or 3 years, they are always seeing a long term relationship with the school, so that is why the school to have plus 1 and plus 2, but this is very disappointing. ma'am, even we also want, ma'am came from St. John's, she was taking 11th and 12th, I came from DPS, I was also taking 11th and 12th, so we are, actually because of COVID it has stopped, so COVID के साथ थोड़ा गड़बड़ हुआ, I hope because my daughter doesn't have to change. yeah. We plan है, that is there, but definitely we are looking into it. I'm sure for your younger bachas maybe. Thank you so much. I will do. We will do in the school only. काफी हमको है, हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, टीचर्स हैं, everybody we know. हम करते हैं बच्चों के साथ. Then how they have to choose the subject, कौन सा school choose करना है, कैसे करना है. Commerce के लिए भवन is doing very well. भवन का भी entrance आने वाला है. चंडीगढ़, अच्छा यहीं डालना है आपको. चंडीगढ़ में तो भवन चंडीगढ़ रहेगी ना. नंबर 1 पर वो है. देन DPS काफी अच्छा कर रहा है. DPS No, sorry, I am from DPS, 11 years. No, you can't say this one. विवेक के लिए आप कह सकते हो, not for DPS.